Closed doors, I'm a fool for your love. Hello lovely people, welcome back to my YouTube channel. This video is regarding my 1 year ownership review of this beast RS200 and अभी मुझे अराउंड इसको लिए हुए 1 साल हो चुका है. So I have clocked around not much but almost 5,000 kilometers on this. So in this video we will be talking about the pros and cons of this RS200 and my personal opinion that you should buy this in 2022 or not. So let's get started. First of all, talking about the competitors. इसके मार्केट में मेनली सिर्फ दो competitors हैं. First is KTM RC200 and the second one is Yamaha R15, which being a 150cc bike still gives a tough competition to this beast. जब मैंने ये बाइक ली थी उस टाइम इसकी प्राइस थी अराउंड 2,05,000 ऑन रोड हेयर. टॉकिंग अबाउट KTM RC, at that time RC200 was around 235 on road price here, and Yamaha R15 was around 215k rupees. So this was the cheapest bike you could buy, the most affordable one in the 200cc segment. So there's no competition, it's complete monopoly of this beast. मैंने उन दोनों बाइक को छोड़ के इसको इसलिए चुना क्योंकि as you all know RC200 is completely aggressive machine with all the raw power it can have. So जो उसका पिलन seat comfort है and the riding posture of the rider, it's too aggressive. So that's why I didn't choose RC200. Coming to Yamaha R15, please, 150cc is always a 150cc. Moreover, Yamaha R15 में भी काफ़ी इश्यूज़ थे. उसका पीछे हैंडल बार टूट जाता था, उसका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, एंड दैट्स टू मच फॉर बाइक दैट कम्स फॉर अबाउट 2 लाख रुपीज़ सेगमेंट. इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन यू कि आपको चाहिए क्या बाइक से. अगर आप एक कम्प्लीटली स्पोर्ट्स ट्रैक मोड में जाना चाहते हैं तो यू शुड डेफिनेटली गो विद RC200. अगर आपको वैसी ही पावर चाहिए थोड़ी और आपको ज़्यादा एग्रेसिव सिटिंग चाहिए, यू कैन गो विद R15. एंड आई विल कॉल RS200 एज अ स्पोर्ट्स टूरर मोर देन अ स्पोर्ट्स बाइक, क्योंकि इसमें पिलन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं और राइडिंग पोस्चर भी इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, क्योंकि एज यू कैन सी दीज आर द क्लिप ऑन हैंडल बार्स. ये थोड़ा ऊपर की साइड हैं, जैसे अभी नई वाली RC200 में आ रहा है कि आप उसको एडजस्ट कर सकते हो. यू कैन कीप इट एट दिस लेवल और यू कैन कीप इट एट दिस लेवल. लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस व्हीकल. टॉप एंड इसका अराउंड 149 पे इसमें RPM लिमिटर लगता है, बट इट गोज़ अबव दैट. इट गोज़ अराउंड 155, 162, but you have to remap the ECU as you have RPM limiter at 149. Note, इसमें कोई भी एरर नहीं है मीटर में. Not like R15 that you are riding at 140 and it is showing 155, 153. This comes with a 24.5 bhp of power and around 18 Newton meter of torque, which is completely fine for beasts like this. It can cruise at around 130, 120 kmph without any hesitation.
looks wise this is excellent. as you can see ये जो ड्रैगन फेयरिंग है इसका, ये इसको इतना ज़्यादा एग्रेसिव लुक देता है और इस बाइक की रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है. Coming at that, it's a bit controversial. Some people like these headlights, some people absolutely not. But it's all upon your choices, how you like your bike. You can remove it too and replace it with a tail tidy. Coming at exhaust sound, as let me start this engine. It's not too loud as such, but it roars very nicely. It has some bassy noise to it. Let me rev the engine now. Nice. This reminds us like a face. जब नई नई RS200 आई थी जो येलो कलर में फेमस हुई थी बिकॉज ऑफ दिस फेस, ये थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर्स के बम्बल बी जैसा लगता है. एंड दीज आर इट्स आईज एंड दीज आर इट्स आईब्रोज, सो इट रिजेंबल्स अ लॉट टू बम्बल बी. कमिंग एट द वाइब्रेशंस, बहुत से ऐसे वीडियोस हैं जहां बोला जाता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं, बट जितना मैंने अभी तक इसको चलाया है एज सच कोई वाइब्रेशन वाली प्रॉब्लम मुझे आई नहीं है. ना ही फुट पैड्स पे वाइब्रेशन है, ना ही आपको हैंडल बार पे इतना वाइब्रेशन मिलता है, और ना ही आपको साइड मिरर्स पे इतना वाइब्रेशन मिलता है, क्योंकि इट्स नेग्लिजिबल फॉर दिस बाइक. इतना वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर नहीं. मेंटेनेंस कॉस्ट एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसको देख के लोग बाइक लेना या ना लेना पसंद करते हैं. मैंने बजाज इसलिए चुना क्योंकि द पार्ट्स दैट बजाज सेल इज़ कंपैरेटिवली मच अफोर्डेबल दैन अदर कंपनीज़. इसके पार्ट्स आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, इसकी सर्विस काफ़ी सस्ती हो जाती है. जैसे अभी इसकी सर्विस अराउंड 600-700 में कंप्लीट हो जाती है. वेर अगर आप कोई दूसरी कंपनी की बाइक लोगे वहाँ सर्विस चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और आपको सर्विस के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेंटेन. आपको इसमें एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं रहेगा. आपको फ्रंट में भी बाइब्रेट डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं विद ABS, एंड आपको रियर में भी बाइब्रे ही ब्रेक्स मिलते हैं विद ABS. सो इट्स अ डुअल चैनल ABS बाइक. जो आप कितने भी स्पीड पे हो, यू जस्ट हिट बोथ द ब्रेक्स टाइटली एंड इट विल स्टॉप विदाउट स्किडिंग. सो आप इस पे पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं. इट्स अ कम्प्लीटली रिलायबल बाइक. ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी कि आप अगर भाग रहे हो तो ये भागेगी भी, जब रोकना है ये रुकेगी भी. सो इट्स अ वेरी मेजर पॉइंट इन दिस बाइक. टॉकिंग अबाउट द कंसीक्वेंसेस ऑफ दिस बाइक आर एज सच कोई बड़ा कंसीक्वेंस नहीं है, बट आई वुड लाइक टू से दैट लेकिन 2021 या 2022 की बाइक के हिसाब से व्हाट आई मिस द मोस्ट इज़ इट डजंट हैव एनी gear indicator in its meter. So some people do is they are taking out the meter, secondary meter from Dominar 400, and they are installing it here so that they can see what the gear positions are. So it should be there. Please Bajaj, it's 2022. Second point to the cons are its panel gaps. Yes, इसके बारे में हम सबको पता है कि बजाज के अंदर पैनल गैप्स काफ़ी हैं. एज यू कैन सी दीज आर अनइवन पैनल गैप्स here, but when you see at other end it's completely fine, but here are the panel gaps. So panel gaps are something that they should acknowledge in, but as Bajaj always improves herself,
F250 एंड 160 एंड 250 इन सारी बाइक्स में पैनल गैप्स की प्रॉब्लम ख़त्म कर दी गई है. पैनल गैप्स आर एज टू एज मैचिंग. सो we are looking forward when the RS200 will get those updates. So stay tuned to Bajaj. This vehicle comes with a rear tire of 130 by 70 size. हम इसमें बड़ा वाइडर सेक्शन का टायर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो इतना ब्रॉड लगेगा नहीं क्योंकि इसका रिम साइज छोटा है. सो अगर इसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके तो वी कैन install a bigger tires in this, which will look much cooler than this stock MRF 130 by 70 inch tire. सबसे ज़्यादा जो आपको इस व्हीकल में बॉदर करेगा दैट इज़ अ ग्राउंड क्लियरेंस. जब से BS6 कंप्लाइंट हुआ है ये व्हीकल, आपको इसके बॉटम में यहाँ कैटालिटिक कन्वर्टर मिलता है. तो whenever you are on a speed breaker, दिस यू हैव टू बी अ वेरी केयरफुल अबाउट दिस, क्योंकि ये जो इसका कैटालिटिक कन्वर्टर है, एज यू कैन सी, दिस हिट्स मोस्ट ऑफ द टाइम टू द रोड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस. ऑफ कोर्स यू आर राइडिंग अ स्पोर्ट्स बाइक, बट बजाज यू कैन इम्प्रूव दिस. अनदर कॉन वुड बी द साइड मिरर्स. इनकी विजिबिलिटी और अच्छी की जा सकती थी, but these are not quite that efficient, to be honest. This should have come with a much better mirrors than these. इनकी विजिबिलिटी काफ़ी सुधारी जा सकती थी, जो कि अभी इतनी ज़्यादा अच्छी आपको लगेगी नहीं. These are too hard to rotate or adjust, so this can be improved too. So ये था मेरा 1 year ownership review about this vehicle and why I chose this. So now it comes to the point that should you buy this in 2022 or 2023 or not? I'll say completely go for it, as it's very good for your pocket and it is a combination of both. You can be a adventurer in this or you can be a completely track beast in this. This vehicle gives you a confidence that none other vehicle can, so completely go for it. In case I miss something over this vehicle, please comment down below and tell what are your cons and pros about this vehicle. So this was all about this video. Thanks for watching. Please subscribe and we'll meet soon.